It's more or less a walk and talk with WhatsApp. WhatsApp, what is your impression? डस्टबिन से मुक्त हों तब जाके कहीं पर कुछ स्वच्छ साफ कुछ नया दिखेगा क्योंकि जो ऊर्जा यहाँ पर मुझे महसूस This is a flowing stream. It's a stream. As I stand here, there were heroes that existed before me. There are unborn heroes which will talk tomorrow after me. At this moment, I am just hearing and living this moment. ये अपने आप में ही एक चमत्कार है. This is a gift that we are living. इस चमत्कार को लगता है. I keep wondering, many of my students also keep asking me as to what is WhatsApp's impression about fear. What is fear and how do we, in fact we saw the play wherein he is overcoming depression. Of course there was a lady love in his life, the lady in white who came and changed his perspective about life. What is your impressions about fear? Fear is a reality which you have to understand. You जिस तरह आप अपनी परछाई से मुक्त नहीं हो सकते, fear will always be a part of you. Any living organism has fear, and that survival fear mechanism is hardwired in the human species, in the living species. That's the survival instinct in man. But courage is having fear and still doing things. ऐसा नहीं कि हमें डर नहीं लगता है था या डर नहीं लगता है, उसके बावजूद हम निकलते हैं, करते हैं, हारते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं. That's the way the human evolution, that's the way the life journey is towards its own fulfillment. And there is no full stop, there is no horizon. You can't sum up. मेरे जो last discourse जो यूजी कृष्णमूर्ति जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो वो it would be a tragedy if you call him a guru, because that would defeat. My singular purpose is not to give him the status of a god. I would rather call him a fraud than a god, because he refused to join that bandwagon. So he said, let me be erased from the sands of time. His last words to me was, I don't want to be remembered. और हमारा जो cultural जो एक pursuit होता है, we do everything to be remembered. We do everything to be remembered. तो वो शख्स जो है, उसकी ज़हनियत का अंदाज़ा शायद आपको इस वक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने schools में, अपने पाठशालाओं में, अपने colleges में सिखाते बच्चों को कि they must become figures to be remembered and revered. I can sum up everything on entry when I came. My success was instinctively to step onto my own rangoli and to raise it. That was what leapt out of my body. Because I feel I don't want to burden these children with my non-existent greatness. I'm a fumbling, stumbling person. I have no greatness of my own. I'm an ordinary, simple person. I have fallen down and I've gotten up. I have learned through trial and error. I have failed more times than succeeded. I have failed my way to success. So don't be frightened of failure. If a mediocre, ordinary person like me can make it, where someday you give me a tribute like this, I assure each child here, each one of you can do it. Never was a child like you before. Never will there be a child like you again. You need syllabus, you need basic skills, because that's the language, वो ज़बान है. हमको एक दूसरे ज़बान की ज़रूरत नहीं पड़ती, खामोशी में ज़्यादा बात कम्युनिकेट हो जाती है. I think you need that, but ultimately, please own up yourself on your DNA. When you were born,
You were gifted with everything that life has in its treasure box. Don't let the schools and institutions erase that. That's why I say institutions polish pebbles and dim diamonds. Don't be a dim diamond. Don't let the teachers take away your shine. I had the guts to do it. I remember I was telling my writer friend Shurita when I came here. I said, सामने डॉन बॉस्को एक स्कूल है जहाँ पे मुझे निकाल दिया था मुझे वो सीन याद है कि the prefect of study called me and said कि Mahesh, you could come to the school to learn something, to get knowledge, but you know everything, so why should you come? So the important at me said, yes father, I think why should I come? And he was very angry and he threw me out. But it's taken me so many years to know that I didn't know anything. That's why the journey is to arrive at that point to know that you will never know. You will never be able to capture life in phrases, in words. इसलिए अलग-अलग नजरिए से जिंदगी को देखना पड़ता है. And उसके बावजूद हाथ आता ही नहीं. Great Dal Kumar जिनका आप जिक्र कर रहे हैं. I was interviewing him in Bradford, and I asked him. I said, Mr. Yusuf Khan, what it has been for you to play Dilip Kumar in this lifetime? उन्होंने पीछे बहुत बड़ा स्लाइड लगाया था उनकी देवदास की तस्वीर थी बहुत खूबसूरत. वो बैठे थे उन्होंने ऐसा देखा उससे आप उनकी हटिए. उन्होंने कहा कि exhilarating, mesmerizing, frustrating, यार कुछ हाथ में आया ही नहीं, कुछ बात समझ में आई ही नहीं. परसों मैं अपने सीनियर कलीग सलीम खान साहब के साथ था, तो उन्होंने अशोक कुमार जी का जिक्र किया. अशोक कुमार जी भी कहते थे यार कहाँ से आए हैं, क्या किया, कहाँ जाने को समझ आया ही नहीं. Life is a mystery. Let us leave it unexplained. Life doesn't want a meaning. Life is an experience. We all will try and capture it and say कि my meaning is the only meaning. बराबरी पता क्या होती है? बराबरी जो आप समझा रहे थे बच्चों के अलग-अलग ज़बान से, is to know that my view is as important as your view. And this country, this great country, had that space. कि भैया मेरे नजरिए से जिंदगी जो है ये हाथी को अगर आप पूछ समझने कि क्या वो हाथी पर इंसाफ होगा, नहीं. अगर आप उसको सिर्फ सूंडी है, कोई हाथी को की पूछ पकड़ता है, हाथी को तेरी पूछ है, कोई उसकी सूंड पकड़ता है, उसका सूंड है. तो एक व्यक्ति है जो पूरे हाथी को देख रहा है, उसका नजरिया अलग है. वो पूरा हाथी हम देख नहीं पाते. हमारी जिंदगी का तलिया आती है. We do not understand. That's why the great Guru Nanak Ji, there was a moment that I read from there. He was sitting inside and the people came to Guru Nanak Ji. They have come to meet you. He says, I don't want to come. They keep on asking me to explain about him. मेरी क्या औकात है, मैं क्या हूँ कि मैं उसको डिस्क्राइब करूँ लफ्जों में. And then he gave the analogy of कि क्या आपने अगर गुड़ पता नहीं है तो मैं समझा पाऊंगा कि गुड़ क्या है. Great gurus saying that we can't tie up life in words. शब्दों में या images में एक व्यक्ति की क्या औकात है कि इतनी बड़ी ये जो रहस्य है, जो सदियों से जो है, sages have come, will keep on coming and going, but the mystery of life will continue, and that is the way it should be. And today, I think let us dedicate this moment to that thought that each one of us will experience life. Wow. Each one of us will have a moment where you will try to sum up life and say, okay, this is it. Pause. That is not it. जो शब्दों में बंध जाए वो जिंदगी नहीं. आसमान वो नहीं जहाँ पर आप लकीर ड्रॉ कर सकते. It is endless. I think that is what the children of your college
exude in me. I'm inhaling their vitality. Oh. They are like a flowing. This is the Gangotri. This is what we do. कुछ नहीं ऐसी देख रहे हैं मुझे देखते रहते हैं बस let's look at each other. Like your inspirer. My last 8 days with Mr. Yogi Krishnamurti, who spent 30 years with me, was wordless. There was no conversation. लफ्जों से गहराई जो है कम्युनिकेट हो ही नहीं पाती है. Try it just now for 2 seconds. Be quiet. Why destroy this beauty with words? I have no hesitation in saying that I know one thing that I don't. That's why I'm willing to listen to my children when they talk to me. I listen to them, they teach me. I think the elders, the teachers need to learn a lot from the students. The age that we live in, the educator needs to be educated. The observer is the observer. The world is in a mess because of the education that we have given to the children. We'll have to own up the mess. We have created this mess for them. They have to clean it up. We are responsible for this. So I was asking the great Dalai Lama, all the stories that we were told have not helped us to keep man together. No corner of the human globe, the world is left where man is not led, been attacked by his own brother. Huh? So then, is there a group? Is there a story that will hold mankind together? The idea of India that you keep on talking about so vehemently, you just keep on re-emphasizing, is itself under fire. We, in this age of communication, have never been so divided. Right. What is the solution? The solution is first own up that we are divided. पहले मानो तो सही बीमारी है. आप मानेंगे ही नहीं. You're talking about what did Guru Nanak Ji say? Living the truth is more important than truth. Please walk your talk. Don't tell your children what you don't do. When I was a little boy, I used to see the teachers don't live what they say. Parents don't live what they say. What was very heartening for me to hear from your mouth, sir, was when I entered, you say, that's a moment that will remain etched in your mind. Why? Not because of the performance. I live my word. Yes. Live your word. Live your word. Live your word. Kari and my friendship is not just words. It endures on living those words. So I think that's all. And you don't require to be a very intelligent person to live words. Cinema तो ये सीख ही नहीं कि हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं. बेहतर बनाएंगे. I think the stunning imagery of Sarak 1.5. Oh goodness. It's very good, very good, very good. Two, 3 minutes. Sukhveer. Sukhveer आया. Sukhveer. अब तू बोल. मैं बहुत बोल रहा there's a moment I must talk about before I. There was a great moment in the life of Sri Ramakrishna Paramahansa and Vivekananda. Sri Ramakrishna Paramahansa was the great sage of West Bengal, and Vivekananda ji was his supposed disciple. So, Ramakrishna ji was a great bhakt of Ma Durga, Kali. But he, unfortunately, towards the end of his life, got cancer of the throat.
तो वंस विवेक वाज वाचिंग के सब लंच तो खा रहे थे और उनके जो गुरु जैसे वो बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते थे उनकी ईट तो वो नाराज हुए उसको महसूस करके उन्होंने कहा कि ये क्या है, माँ करते रहते हैं और ये है फल मिला आपको कि ये देखिए फाइनली हुआ क्या कि हम खा रहे हैं और आप कैंसर से सफर कर रहे हैं। तो उनके गुस्से को उन्होंने महसूस किया और कहा ठीक बोला तू बेटा, मैं पूछता हूँ माँ से। तो दूसरे दिन वो मुस्कुराते हुए आए और फिर विवेक के पास गए, उसने कहा कि मैंने बात की माँ से। और माँ ने कहा कि बेटा बहुत पी लिया अपने गले से, बहुत खा लिया, अब तू विवेक के गले से पी, उसके मुंह से खा, तो तू खा बेटा, मैं तेरे को देखता हूँ। बहुत बोल लिया हम, अब इनके मुंह से बोलेंगे। थैंक यू जो आप आए और हमें मौका मिला कि आपके सामने परफॉर्म करें। और ये जो हमने सड़क 1.5 किया था, एक्चुअली इट वाज आइडिया कि हम डिप्रेशन को शोकेस करें। बिकॉज इन द फर्स्ट पार्ट जो संजय दत्त का कैरेक्टर था वो भी डिप्रेस दिखाया गया था। कहीं पे हमने रिसर्च से पढ़ा कि सड़क को भी डिप्रेशन से रिलेट करती है। श्वेता तुम कहीं तुम्हारे कुछ So made a point to make Sadak on the basic structure of depression। तो जो स्क्रिप्ट थी वो मैंने लिखी है, बट इट वाज लाइक आइडियाज, ओरिजिनल तो कोई होता नहीं है। तो मैंने लिखे हैं, उस स्क्रिप्ट पे 4 चंद लगाने का काम अभिषेक पुरोहित का था। और बाकी पूरी टीम को मैं थैंक यू करना चाहूँगा, उनकी वजह से आज हमारा सक्सेसफुल हुआ है ये पूरा Sadak 1.5। तो थैंक यू टू ऑल, और आपको भी सर। I was very happy you brought out my daughter's book. She has been afflicted with depression, but she looked into the eyes of depression. And she, in fact, recently I asked her at a public forum, अच्छा शायद मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में वो एक खौफनाक रात नहीं आती तो क्या ये रोशनी जो तुम किताबों में बांध पाई हो वो बांध पाती? She said, no, I think that night, the dark night of the soul, to which I read, was very important. So don't be scared of your darknesses. Don't be scared of your suffering days. The light that comes out from your dark days is more glory than the light that you confront without going through darkness. Life is no interval, it's an ongoing drama. It never stops. But आज मुझे इसकी जो मौजूदगी से बड़ा मुझे लगा, मुझे टीनू याद आ गया। टीनू तो वो था, ये अनसंग लोग होते हैं जिनका जिक्र नहीं होता। जिंदगी के पहिए टीपू जैसे लोग चलाते हैं। अब जैसे हाँ बिल्कुल, आ जाओ तुम, तस्वीर लो बदलना की मेरी, आओ तुम। जुबैर आजमी जी आइए। मास्टर क्लास कुछ चाहते थे, कुछ हो नहीं पाया। मैं अपनी सब लोग की निकल गया, माफ करता।
उनसे मिले? इतनी इनोसेंस, इतनी शिद्दत, इतनी इतने पाक अंदाज से मैंने कहीं पर ऐसा अपना रिसेप्शन, जिंदगी भर मैंने लोगों के इंस्टीट्यूशन में जाकर बातें की हैं, मगर यहाँ पर जो महसूस हुआ इज अनपैरेलल्ड। देयर इज समथिंग सो लिविंग एंड सो फ्रेश एंड सो ब्यूटीफुल हियर। कुछ सेशन भी हुआ, बच्चों से आपने इंटरेक्ट भी किया, क्या कुछ बातचीत हुई और कुछ यादें ताज़ा हुई आपकी? नहीं, मुझे तो वो लम्हा जहाँ पे इनकी आंखों में झांक रहा था मैं, उससे नजर ही हटी नहीं मेरी, क्योंकि ये अतीत में कौन देखता है, बहुत हो गया अतीत पे, लोग बहुत इधर आते हैं। मुझे तो ये लम्हा जो सामने महसूस कर रहा था वो अपने आप में उसने बांध के रखा था। सड़क वन पर कैसी लगी आपको? वेरी गुड। मुझे उससे लगा कि देखिए, आपका काम मुकम्मल तब होता है जब लोग आपके काम को गुनगुनाते हैं, आप लोगों के जब जहन में कहीं जाके बस जाते हैं, तब जाके आप संपूर्ण होते हैं। अपने आप में आपके काम की कोई अहमियत होती नहीं। सो अभी सड़क के स्टेटस के बारे में अभी नहीं, स्टेटस